this lecture we are going to start with 3.3, which is quadrilaterals, and we are going to start with exercise 3.6. We are using Cambridge IGCSE Maths Core and Extended Course Book, second edition. Let's go over everything briefly. So quadrilaterals are something. Quad means obviously means four, and then that means a plane that shapes with four sides and four interior angles. Quadrilaterals are something which has four sides and four interior angles. So these are several types of quadrilateral which we are going to look at. So this is a parallelogram, which is a slanted rectangle. So what exactly in it is that opposite sides, both of them are parallel and equal, right? These two lines are parallel to each other, and these two lines are parallel to each other. और जो B एंगल है वो D एंगल के बराबर है, और जो A एंगल है वो C एंगल के बराबर है, और इनका जो डायगोनल है वो बीच में बाइसेक्ट कर रहा होता है रेक्टेंगल के अंदर। यानी बाइसेक्ट मींस उसको इक्वल दो पार्ट्स में कट कर रहा होता है। रेक्टेंगल हमारे पास नॉन स्लांटेड पैरेललोग्राम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सारे कॉर्नर्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और ये ऊपर वाली लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन के एक तो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, जैसे हमने पैरेललोग्राम में देखा। अब यहाँ पे भी उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये दो लाइंस लगाई हुई हैं, एरोस आर बेसिकली फॉर पैरेलल, फॉर शोइंग दीज टू आर पैरेलल, और ये जो कट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, दैट मीन्स दे आर इक्वल। और अगर इनके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी बाइसेक्ट भी करेंगे। फॉर स्क्वायर all four sides are all four sides are equal to one another, पर जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, जो साइड वाली लाइन है वो साइड वाली लाइन के पैरेलल है। हर कॉर्नर 90 डिग्री है, और जिनका डायगोनल है वो इक्वल है, और वो बाइसेक्ट सारे एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। These are some properties that you need to memorize or remember. These are not as much of tough, but you will gradually get a hold of it. Then we have rhombus, which is a slanted square. In this, all sides are equal in length. ये length इससे बराबर है, ये length इससे बराबर है, and opposite sides, ये वाली line इसके parallel है, ये वाली line इसके parallel है, ठीक है, ये ऐसे है। और इनके जो diagonals हैं वो बाइसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को 90 डिग्रीज के ऊपर, और इनके जो एंगल्स हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी A जो है वो C है और B जो है वो D है। A C के बराबर होगा और B D के बराबर होगा, ये दोनों चेंज नहीं हो सकते। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि वन एक पैरेलल साइड का एक पेयर होता है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट नीड्स टू बी अ ट्रेपीजियम। एंड देन वी हैव अनदर क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज अ काइट, और काइट के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी कि A जो है वो B के बराबर है और जो C है वो D के बराबर है, और ऊपर वाले और नीचे वाले जो है ये हमारे पास ये भी इक्वल आ रहे होते हैं। जैसे ये रेड वाला रेड के बराबर है, ये ब्लू वाला ये ब्लू के बराबर है, और इन ये C को और D को, जो इतना सा ये ब्लू पार्ट है, लेट मी जूम इन अ बिट, जो ये C वाला पार्ट है और ये जो D वाला पार्ट है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इन दोनों को ऐड करके ये वाला पार्ट बन जाता है। इसी तरह ये वाला पार्ट करके ये बन जाता है, और इनके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे और बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं। ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, ठीक है। सो दीज आर सम रूल्स ऑफ काइट। And the important angle sum of quadrilateral, all quadrilateral can be divided into two triangles by one diagonal. कोई भी जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसकी फोर साइड्स है वो दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो सकता है यूजिंग वन diagonal line. And we already know that sum of angle in a triangle is 180 degree. और अगर वो दो ट्राइंगल के अंदर हो सकते हैं, that means 180 plus 180 is equal to 360 degrees. ये हमारे पास कौन सी शेप है, काइट, और ये वाली हमारे पास कौन सी शेप, स्क्वायर। एंड देन वी हैव ट्रेपेजियम ओवर देयर। सो व्हाट वी आर डूइंग कि वो एक सिंगल डायगोनल के साथ कट हो रहा है and becoming a triangle. Now let's move on to the exercise for 3.6. Okay, a quadrilateral has two diagonals that intersect at right angles. राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री के ऊपर कट कर रहा है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास दो डायगोनल हुए हुए हैं और इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल्स पे। व्हाट क्वाड्रिलेटरल्स कुड इट बी? अभी हमने ऊपर से डिस्कस किया
It can be a rhombus, right? It can be a rhombus. It can be a kite, because kite भी जो है rhombus होता है, जो हमने भी देखा square पर slanted square. And then kite हो सकता है, kite क्योंकि kite की shape भी ऐसी होती है, right? Like that's how a kite looks. तो kite भी हो सकती है, and obviously एक one and only जो कि हमेशा हमारा है square. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल नहीं हो सकता क्योंकि वो 90 डिग्री के ऊपर नहीं इंटरसेक्ट करता. The diagonals are not equal in length. Diagonals equal in length नहीं है. We need to emphasize on that. What quadrilaterals could it not be? Now they're saying कि जो diagonals हैं वो equal नहीं है, यानी ये वाला लंबा है for example और ये वाला छोटा है, इस तरह का diagonal है. Now tell me कि ये कौन सा नहीं हो सकता. ये स्क्वायर नहीं हो सकता और ये रोम्बस हो सकता है या नहीं हो सकता. रोम्बस हो सकता है. So it can be a kite as well, so that's why you will say it's a square. Find the value of x in each of these figures, give the reasons. And I think this can be a rhombus as well, because rhombus के अंदर lengths equal होती हैं. Let's go over that once again. You see, these two are equal to each other and these two are equal to each other, and actually all four of them are equal because they are showing two lines for all of them, so the rhombus can be equal as well. So there is going to be square and rhombus, not kite. Find the value of x in each of the figures and give your reasons. Now we need to find the x. Okay, so now we know this is 112, we know this is 112 as well because of opposite vertically opposite angles. So this is going to be 112 as well. You see how previous chapters are interlinked to each other. So now we know as this is 112 and this is a parallelogram. Parallelogram में जो आमने सामने होते हैं angles वो equal होते हैं, यानी this angle is going to be equal to this angle. Similarly x is going to be 112. For part B, okay, this is x and ABCD is a rectangle. They have already specified it as well. So we can see that this is making, if this line is equal to this line and this line is equal to this line, can you tell this is a isosceles triangle? Look at this triangle only. This is an isosceles triangle. And what is the property of an isosceles triangle? The property of an isosceles triangle is that both of the bases are same. So that means x is equal to 62 degrees. For part C, we have these. What is this? It's a trapezium, right? So we have told कि trapezium में क्या होता है कि दो parallel sides होती हैं. Now you need to remember हमने क्या 3.4 I guess उसमें हमने go through किया था co-interior angles. So that's what we are going to look at over here. This is 110 degrees. So what will be this? 180 minus 110, which is going to be what is going to be 70 degrees. And this is also going to be 70 degrees due to co-interior angles. कि ये वाले जो C बन जाता है ना हमारा, it is equal to 180 degrees. Now let's look at D part. D part के अंदर उसने हमें ये दिया है कि हमने x find out करना है. Okay. Now we know this is a straight line and this is 110 degrees and we don't know what is this. What we can do is 180 minus 110 using an angle in a straight line formula. So this is going to be 70 degrees. Now we are going to find this angle as well. Let's zoom in a bit. Yes. So it's 98 degrees. What is going to this? 180 minus 98. That's what we are going to do it. So we will know that 180 minus 98 is 82 degrees. So if we know this is 82 degrees, this is 70. Now we know 70, 82, 92 and x. That means sum of angles in a quadrilateral is equals to what? Equals to 360 degrees. This is a 2, please understand this is a 2. Okay, we got to know that the final answer is going to be 116. So x is equals to 116.
Now let's look at E part, and E part we know that all of them are quadrilateral, and sum of quadrilateral is indeed 360. So we are just going to add all of them. X plus 2x plus 3x plus 4x is going to be 360. So that means 1 plus 2, which is 3, 3 plus 3, which is 6, 6 plus 4, which is 10. So 10x is equals to 360. So what is going to be x? X is definitely going to be 36 degrees. And after that we have F part, and in the F part we got to know that this is a 90-degree angle, this is 110 degree, this is 50 degrees, and using the angles and the sum of angles in a quadrilateral is 360. We can conclude that 360 minus 110, 360 minus 110 minus 90 minus 550 will give us this answer, right? So let's do this. So we'll say 360 minus 90 minus 110 minus 50 is indeed going us to give this value. So if we do this on the calculator, we get the value of 110 degrees. Okay, so if this is 110 degrees, we can easily say that 180 minus 110 is going to be 70. So x is going to be 70 degrees. Now the last question, question number 3, find the value of x in each of these figures. Give your reasons. To find the value of x, we can see that this is x. So these two lines are equal to each other. So this is also going to be x. And if these two lines are equal to one another, that means इन दोनों का जो भी वैल्यू होगी, let's say these two are y, तो ये दोनों y ही रहेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, right? अब now we can say that 180 is equal to 70 plus 2y. So by this way we can find out the value of y. Look at the process what we are going to go for. हम सबसे पहले इस जो sum of angles in a triangle के through हम इस y की वैल्यू निकालेंगे. जब हम इस y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये y भी आ गया, 55 भी आ गया और 180 टोटल होता है, तो हम लोग ये x निकाल सकते हैं. जब ये x निकाल लेंगे तो वही वैल्यू x की ये आ जाएगी और इस तरह हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी. So what we are going to do is 180 minus 70 is equals to 2y. You can get this. पहले अगर इसको अगर सही फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे इसको पहले 70 plus 2y is equals to 180 और मैंने उसको बस रीफॉर्म कर दिया अपने अकॉर्डिंगली जैसे मुझे नीड थी. तो 110 divided by 2 will be the answer for y, and which is going to be 55 degrees, right? So this is y is equal to 55 degrees. So if we know this is 55 and this is 55, we can find this as well. So 180 minus 55 minus 55, we will get this value which is 70 degrees. So if actually we will get this value 70 degrees. So if both of the bases of the triangle are similar, so x is equal to 70 as well. For the B part, we can see that QP is equal to RN. So they have told us where is QP. QP is equals to RN. So both of them are equal in length. Okay. And this is 90 degree. Both of lines are parallel to each other. And these two lines are parallel to each other. So this is a smaller a parallelogram and this is a rectangle on top of it. Now we can see that angle MNP MNP, this angle, this is 98 degree as well because parallelogram के अंदर जो opposite angles होते हैं वो same होते हैं. They are similar to each other. ठीक है. Now angle RNM we can find it through 180 minus 98 and we can conclude that this is going to be 82. Okay, due to angles on a straight line. After that, we can see that if to find a total sum, we can see that if this is the same value, let's do it. 180 is equals to is okay. Can we like work these 2x plus 82.
this is going to be x as well, because both of those lines. So you see, if this line is equal to this line और ये बिल्कुल उसके ऊपर है, तो ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि वो दोनों इक्वल होंगी. जब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल को देखें तो ये दोनों लेंस इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इसका मतलब है कि ये दोनों एक्स एक्स है, तो 180 इज इक्वल टू 2x प्लस 82. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की फाइनल वैल्यू अगर हम लोग इसको 180 माइनस 282 करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, we will get the value of x is equal to 49. And the last part of the last question of this video, we can see okay, this is x, this is 70, and we know this line is equal to this line and this line are equal to these lines. Now we can say if this is going to be a z angle, क्योंकि ये parallelogram है और parallelogram नहीं rhombus है, but there is going to be following a z, so this is x as well, right? And we can figure out how to find this. If you know this is x, that's amazing. Now we need to find what angle is this, and this is going to be 70 as well, due to rhombus being the oppositely equal. Now we can see कि अगर हम लोग 180, also let me go over something, let me show you something else as well. For rhombus you can see that a is equal to c, ये जो हमने b property apply किया, b is equal to d. And one more thing कि जो इनकी opposite sides हैं वो parallel है, और ये जो opposite sides equal भी हैं, opposite angles equal है, opposite sides parallel, और सारी sides equal है. So if we know this part, this is going to be this part, and this is also going to be the this part as well, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो ये भी उसका like 2x आ जाएगा उसके अंदर वैल्यू ना, right? Oh, we got a little down. Okay, this was it, this was the question, right? So we can see that if this is 70, this is x, this is also going to be x, and this is also going to be x. So we can see अगर हम लोग इस वाले triangle को देखते हैं तो we have x plus 70 plus x, so 2x plus 70 is equal to 180. 2x plus 2x plus 70 is equals to 180. Please work. Okay, right? So 180 minus 70 is going to be 110, and when you will divide 110 with divide by 2, we will get the value of x as 55. So this is the end of this video, and that's how you have completed all of